Hello students, today we are going to start next points, that is Gibbs energy and spontaneity. First of all, give the heading Gibbs energy and spontaneity. The total entropy change of the process is given by entropy change of system plus entropy change of what? Surrounding. ये टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस है. एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग is equal to entropy change plus entropy change of what? Surrounding. S is for the system. This word is can be neglected. The relation between the delta G and total entropy change. The relation between the delta G and total entropy change of the process is, according to the second law of thermodynamics, the process is a spontaneous when total entropy change is greater than what? 0. जब total entropy change 0 से greater है, that time the process is the कैसी होती है? Spontaneous होती है. E delta H is the enthalpy change of the system. Delta H is the enthalpy change of the system, and negative delta is the enthalpy change of the surrounding. Therefore, the entropy change of the surrounding is the surrounding का entropy change minor delta H upon क्या है? T है. Therefore, putting these values in this equation, the total entropy change is equal to entropy change of the process minus delta H upon T, because entropy change of the surrounding यहाँ पे क्या है? minor delta H upon T. Now this equation is can be rearranged. T delta H total is equal to delta H minus क्या? T delta H. According to the Gibbs-Helmholtz equation, Gibbs-Helmholtz equation आपको पता है delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, therefore delta G is equal to minus T delta S total. If the total entropy change is greater than the 0 and Gibbs energy is less than 0, the process is carried out. The process एक कैसी होती है? Spontaneous होती है. ख्याल में रखो, the total entropy change is greater than 0 and delta G is less than 0. The process is accompanying the कैसी होती है? Spontaneous होती है. At constant temperature and pressure. In a spontaneous process, the Gibbs energy is क्या होती है? The Gibbs energy is decreases. ख्याल में रखो, when in the at constant temperature and pressure, in spontaneous process, the Gibbs energy is क्या होती है? Decrease होती है. Therefore, the second law of thermodynamics leads to the contribution of the spontaneous process. Second law of thermodynamic ने कुछ क्या बताया आपको? कंडीशन बताए for the what? The process is a spontaneous या non spontaneous. इसकी वजह से मैंने आपको बताया the second law of thermodynamics leads to the some contribution for the spontaneous. The first important condition is the if the total entropy change is greater than 0 and delta G is less than 0. The process एक कैसी रहती है? Spontaneous रहती है.
Second one is the total entropy change is less than 0 and Gibbs energy is greater than 0. The process is कैसी रहती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रहती है. प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस. And third one is that is the total entropy change is equal to 0 and delta G is equal to 0. The process is the process कैसे रहती है, equilibrium रहती है. This is the three important condition and these three important condition leads to the second law of thermodynamics for the process is the spontaneous या non-spontaneous या equilibrium. This is the information about the Gibbs energy and spontaneity. Okay, next points we will discuss. That is, अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है. गिव द हेडिंग spontaneity. Spontaneity and delta H or delta S. Now listen carefully. According to the Gibbs-Helmholtz equation, delta G is equal to delta H minus T delta S. The T is the क्या है, the T is the temperature and this temperature is used to the contribution to determine the values of the delta S and delta H. T is the temperature and this temperature is used to the two contribution of the values of the delta S and delta S2. किसके लिए, delta G के लिए. Now, if delta H and delta S both are the negative, the value of the delta G is the negative only when, कब नेगेटिव रहेंगी, only when the value of the delta, the negative value of the delta H is must be greater than the, ये किससे ज्यादा चाहिए, डेल्टा एस से ज्यादा चाहिए. ओके, एंड इट इज अ रिगार्डलेस ऑफ द व्हाट, ओनली विच टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. कहा कब पॉसिबल है, लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर को डेल्टा एच की वैल्यू किससे ज्यादा रहेंगी, डेल्टा एस. दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी इज अ नेगेटिव. सेकंड वन इज अ ई delta H and delta S both are the positive. The value of the delta G is a negative only when the T delta S is must be greater than the, किससे ज्यादा चाहिए, डेल्टा H से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए. जब T डेल्टा S से किससे ज्यादा है, डेल्टा H से ज्यादा है, that time the value of the delta G is a negative, is a regardless of the only, ये कब पॉसिबल है, it is a regardless only what which temperature, हाई टेम्परेचर. जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा that time the delta S की वैल्यू किससे ज्यादा रहेंगी, डेल्टा H से क्या रहती है, ज्यादा रहती है. Third condition is the E, delta H is the negative and delta S is the positive. The value of the delta G is a negative, the regardless of the any temperature. कौन से टेम्परेचर को, जब डेल्टा एस नेगेटिव है and delta S is a positive, the value of the delta G is a negative as a regardless of the any temperature. Fourth one is a if delta H is the positive and delta S is the negative, the value of the delta G is only positive regardless of the any temperature. यहाँ पे भी कोई भी टेम्परेचर रहा तो तभी भी द वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी इज द किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है. द प्रोसेस इज टेक्स प्लेस, द प्रोसेस कैसी रहेंगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेंगी. कैसी रहेंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस.
This is the information of the spontaneity and delta H or delta S. How to determine the process is a spontaneous or non-spontaneous. They can determine they can determine on the basis of determining the values of the delta H and what delta S for the किसके लिए delta G के लिए. When the values of the delta G is a negative, जब delta G की वैल्यू नेगेटिव रहेंगे, द प्रोसेस इज अ टेक्स प्लेस, द प्रोसेस एक कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स. टेम्परेचर एज ए इक्विलिब्रियम. Temperature of equilibrium. From equilibrium, delta G is equal to delta H minus T delta S is given. T is equal to delta H upon what? Delta S. From equilibrium, delta G is equal to delta H minus T delta H. T delta S given T is equal to delta H upon delta S. When the effect of the, जब किसका इफेक्ट होता है, when the effect of the temperature, the process is a change, spontaneous is converted into what? Non-spontaneous. जब कोई प्रोसेस के ऊपर किसका इफेक्ट किया, तो टेम्परेचर का इफेक्ट किया, तो देयर इज अ स्पॉन्टेनियस इज कन्वर्टेड इनटू, उसका कन्वर्जन किस में होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में होता है. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इज इंडिपेंडेंट ऑन द व्हाट, टेम्परेचर के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है. फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये आपको ऐसा बताता है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. when introducing the values of the delta H and delta S is depend on the what, temperature. But only when there is no any इफेक्ट ऑफ द मॉडरेट टेम्परेचर, उस इक्विलिब्रियम प्रोसेस के ऊपर मॉडरेट टेम्परेचर का कुछ भी क्या नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. ये आपको क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे मैंने बताया है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, इस इक्वेशन से देयर इज नो एनी, वो क्या नहीं है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है. But when the effect of the temperature, the process is a spontaneous is converted into non-spontaneous. Now when introducing the delta H and delta S is the depend on the temperature, but there is the moderate temperature, no any effect on that equilibrium process के ऊपर कुछ भी क्या नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट्स, अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है. गिव द हेडिंग, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक्स, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Okay, now listen carefully. The Gibbs energy change of the reaction is delta G is equal to delta G0 plus RT ln Q है, where delta G0 is the standard Gibbs free energy change, standard Gibbs energy. Okay, and the Gibbs energy change of the reaction is when the reactant is a react and to obtain the what, product. That time there is a perform the Gibbs energy change of the reaction.
Q is the where Q is the reaction quotient, यहाँ पे जो है Q is the क्या है reaction quotient है, Q is the reaction quotient, आणि that reaction quotient is analogous to the equilibrium, ये किसको analogous है, equilibrium constant को क्या है analogous है. ओके, therefore इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस, इन द प्रोसेस द नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, प्रोसेस में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, इन द प्रोसेस द नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर फॉर द व्हाट विच रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है. उस गैसियस रिएक्शन में नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर फॉर द व्हाट गैसियस रिएक्शन. कंसीडर अ गैसियस रिएक्शन, एक गैसियस रिएक्शन कंसीडर करेंगे, ए बी बी इट गिव्स सी सी, सी सी प्लस डी डी. ओके, नाउ देखिए डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस आर टी एल एन क्यू सी. Therefore डेल्टा G0 डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस आर टी एल एन सी सी रेस टू डी डी divided by the A raised to BB. They can written is on the basis of the law of mass action. और मैं उसको QP के फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस आर टी एल एन QP. फिर देखिए डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस आर टी एल एन पी सी रेस टू सी प्लस पी डी रेस टू डी डिवाइडेड बाय द पी ए प्लस पी बी रेस टू बी. ओके, नाउ व्हेन द रिएक्शन इज रीचेज द इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन ये कहाँ पे रीच होते, व्हेन द रिएक्शन इज रीचेज द इक्विलिब्रियम, डेल्टा G0 डेल्टा G इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा. व्हेन QC एंड QP इज इक्वल टू द किसको, KC, यानी किसको इक्वल रहेगा, KP को इक्वल रहेगा. व्हेन द रिएक्शन इज रीचेज द इक्विलिब्रियम, डेल्टा G इज इक्वल टू 0 आणि व्हेन QC आणि QP इज इक्वल टू द किसको इक्वल रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC यानी किसको, KP को. Therefore फिर यहाँ पे ऐसा करेंगे, therefore देखिए 0 डेल्टा G0 प्लस आर टी व्हाट एल एन KC आणि 0 डेल्टा G0 प्लस आर टी एल एन क्या है, KP है. Therefore देखिए फिर डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन KC आणि डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्या है, KP है. दे कैन रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द लॉग बेस टू 10, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस टू 10 KC आणि डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी log base to 10 kp. This formula is used to determination of the standard Gibbs energy change of the reaction on the basis of the equilibrium constant. This is the information about the Gibbs function and what equilibrium constant. Okay, good day.